Namaskar, dear learners and listeners. I am Anita Devraj today and I welcome you back to another session of History of the Secondary Courses. World War II, like the earlier war, started in Europe and assumed the character of a world war. The fascist countries wanted to re-divide the world for imperialist gains and thus came into conflict with the established power. We know that Germany was politically, militarily and economically shattered by the Treaty of Versailles. She sought revenge and was ready to have a trial of strength with the Allied powers. The position of Italy was no better. Though Italy joined the Allied powers during World War I with the hope of imperial gain, she did not gain any colonies after the war. She lost nearly 600,000 people during the war. Both the fascist and Nazi parties glorified war and promised to their people that they would bring back the lost glory of their countries through war. They began to follow an aggressive policy of expansion through conquests. Germany annexed Rhineland in 1936, Austria in 1938 and Czechoslovakia in 1938, while Italy attacked Ethiopia. This resulted in social tension and conflict among European nations. The period of 20 years between the two world wars experienced tremendous changes. There was positive developments like national awakening in countries of Asia and Africa also, and popularity of the socialist movement in the Soviet Union and in other countries. The world also saw the worst form of dictatorship in many countries of Europe, especially in Italy and Germany. A major economic crisis took place which affected almost every part of the world, particularly the most advanced countries of the West. The period also witnessed the worst economic depression in USA in 1929, which affected the economy of the entire world. After the war, a number of political movements arose in Europe which was given the name fascism. They had a number of features which were common, that is hostility to democracy and socialism and the aim to establish dictatorship. They were supported by the rulers, the upper class, aristocrats and the capitalists because they promised to save them from the dangers of socialism. They let loose a systematic campaign of terrorism and murder which the government showed little interest in curbing. The dictatorship introduced in Italy by Mussolini is referred to as fascism. The term fascism is derived from Latin word fasces, which stood for symbols of authority in ancient Rome. In 1922, Mussolini came to power with the support of the Italian king and ruled like a dictator from 1925 to 1943. The German version of fascism is known as Nazism. It was established by Adolf Hitler. He promised to reverse post-war settlements and restore German power and glory. His vision of rebuilding Germany into a great nation inspired many Germans to join him. England and France too had to face severe economic crisis, scarcity and unemployment, but they continued with their democratic governments. Despite worker strikes and other disturbances in England, the problems were sought to be solved by forming a coalition government consisting of Labour, Liberal and Conservative parties in 1931. In France, a Popular Front government consisting of left-wing parties was set up in 1936. Soviet Union emerged as the first socialist state of the world. Under the new government, socialist policies were introduced in economy and it was the only country to remain unaffected while all the Western capitalist countries suffered due to the economic depression in 1929. Though USA participated in First World War, the country did not suffer much material loss. Industrial prosperity, political stability and economic growth made it a superpower. However, she suffered the worst economic crisis in 1929 due to overproduction. The banks closed down and people lost their lifelong savings.
The loan which USA had given to the European countries after the First World War had to be withdrawn. It resulted in economic instability in the European countries also. The new government that came to power in USA under Franklin Roosevelt introduced a program of economic recovery called the New Deal. Under this, many reforms were introduced, such as creating new employment opportunities, giving help to the farmers, etc. Japan was the only country in Asia which emerged as an imperialist country. You have already read that it defeated Russia in 1905. During the period between the two world wars, Japan became a strong military power and supported fascism. She signed the Rome-Berlin-Tokyo Axis with the fascist powers. She also signed the Anti-Comintern Pact to check the spread of communism along with Germany and Italy, indicating their hostility to the Soviet Union. You can understand about the rise of Japan as a military power and also her support for fascist powers. By signing the Rome-Berlin-Tokyo Axis, these three powers committed support to each other. Japan was given a free hand to expand control in Asia and the region of the Pacific, while Germany and Italy would have a free hand in Europe. The success of the Soviet Union alarmed the Western powers. Being capitalist countries, they wanted to check the spread of communism. So, they adopted a systematic policy of favoring Italy and Germany, who were anti-communists. This policy is referred to as the appeasement policy. German army, which was restricted to 100,000 soldiers after the First World War, increased her strength to 800,000 soldiers without any protest from the Western treaty spectators. In 1937, civil war began in Spain between the popularly elected government and the fascist leader under General Franco. Hitler supplied arms and ammunition to overthrow the democratically elected government in Spain. Soviet Union appealed to England for collective action against General Franco. When the whole world sent support to the existing government, England and France did not take any action. This appeasement policy reached its climax when Hitler invited the prime ministers of Britain and France to Munich in August 1938. The Munich Pact was signed by them in 1938, allowing Germany to annex Sudetenland in the northern part of Czechoslovakia. Later, the whole of Czechoslovakia was a policy of appeasement, strengthened the fascist powers. It was now clear that Britain and France wanted Germany and Italy to act against the Soviet Union. To stall these plans, Soviet Union signed a pact with Germany by which both agreed not to attack one another. This gave her some time to prepare for future confrontation, while Germany obtained the neutrality of the Soviet Union. The scene was set for World War II when Germany attacked Poland on 1st September 1939. Britain declared war on Germany on 3rd September 1939. Now, let us look into the consequences of this war. The war came to an end in September 1945. This was the most destructive war in human history. It caused unprecedented loss of life, property and resources. Big buildings were razed to the ground and thousands of people were uprooted from their homelands. The German Jews were either exterminated or sent to concentration camps. The Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki were almost wiped off when atomic bombs were dropped on them. The danger of nuclear holocaust was one of the major consequences of the war. Germany was divided into 4 zones, each under the control of one of the victorious powers. The Nazi party was banned and the German army disbanded. Japan was placed under United States supervision. In 1949, when monarchy was re-established, United States troops were withdrawn. Imperialism weakened with USA and the Soviet Union emerging as superpowers.
The world was now divided into two power blocks: the communist bloc headed by the Soviet Union and the Western bloc headed by the United States. The tension and unarmed conflict that developed between these blocs started the Cold War, which continued for a very long time. A major impact of the war was the foundation of the United Nations organization. The world has since then undergone many changes. Its political map has changed. A large number of nations of Asia and Africa who had suffered under colonial rule are now independent. Together, they are now a major force in the world. We will also discuss over here the foundations of the United Nations organization. The horrors of the war made the world leaders realize the need for an international organization for peace. World leaders such as British Prime Minister Winston Churchill, Soviet leader Stalin and US President Roosevelt met at various conferences to decide about the formation of this organization. Finally, on 24th October 1945, at a conference in San Francisco, the United Nations Charter was adopted by the members of 50 nations and the UNO was formed. Since then, 24th October is celebrated every year as UN Day all over the world. The UN is based on the principle of sovereignty and equality of all nations. The main aims of the UN are to maintain peace and security in the world, to prevent future war, to solve international disputes peacefully, and to promote international cooperation. The UN flag consists of the official emblem of the organization, a circular world map as seen from the North Pole, surrounded by a wreath of olive branches in white, centered on a light blue background. Now, what do you think would be the objectives of the United Nations? Like the League of Nations, which was established after World War I, the United Nations too had a major objective of maintaining international peace and security. It also had another major objective to develop friendly relations among nations on the basis of equality and achieving international cooperation in solving economic, social, cultural and humanitarian problems. To promote human rights and fundamental freedom for the people of the world was one of the aims of the UN. It was also to act as a common platform for harmonizing the activities of various nations for the attainment of the objectives of the UN. Thank you very much for listening. NIOS के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां
महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है।
NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। NIOS के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। The NIOS with 2.2 million students is clearly the largest open school in the world. If there were no NIOS, where would the 892,578 students gone during those 3 years? So I mean, look at them not as a statistic but as actual people with faces who would have no other place to go to. NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। I am going to talk about a lady. She is about 88 years old. She met me recently. She has written a book. Name of the book, Bride at 10, Mother at 15, MA at 80. I was astonished to know the indomitable spirit of the mother, and she had great aim which was fulfilled at her age of 80. Her desire was to acquire a master's degree in her lifetime. She worked and worked and worked, while taking care of during her daughter's childbearing. With all the family's commitment, she was proud to announce everywhere that she is appearing for a MA degree at the age of 78. महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला सचिन जाधव NIOS ऐसे लोगों के लिए भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। सचिन ने NIOS से बेसिक रूरल ट्रेनिंग में 1 साल का डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद प्लम्बिंग का अपना व्यवसाय शुरू किया।
यही नहीं, उन्होंने उसी संस्थान के छात्रों को भी अपने यहाँ काम दिया जहाँ से उन्होंने खुद प्रशिक्षण लिया था। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। गणेश की रीढ़ की हड्डी में लाइलाज अल्सर था, जिसकी वजह से उसके शरीर के निचले हिस्से का विकास नहीं हो पाया। उसने NIOS में सेकेंडरी कोर्स के लिए पंजीकरण कराया और घर पर ही कड़ी मेहनत की। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो लड़का घर से बाहर तक नहीं निकल सकता, वो परीक्षा देने कैसे गया होगा। एक मिसाल कायम करते हुए NIOS ने एक एग्जामिनर को प्रश्न पत्र के साथ गणेश के घर भेजा ताकि वो घर पर ही अपनी परीक्षा दे सके। उसने अच्छे अंकों में परीक्षा पास की। अब उसने 12वीं कक्षा के लिए खुद को पंजीकृत कराया है। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। इन बच्चों के चेहरों की मुस्कान एक सबूत है इस बात का कि NIOS बेहतर शिक्षा के लिए कितने प्रयास कर रहा है। कहावत है, एक लड़के को पढ़ाने का अर्थ है एक इंसान को पढ़ाना, और एक लड़की को पढ़ाने का अर्थ है पूरे परिवार को पढ़ाना। NIOS के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का एक अत्यंत अहम क्षेत्र है लड़कियों की शिक्षा। NIOS के प्रयासों से अकादमिक कोर्सेज में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में लगभग 30% का इजाफा हुआ है। आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ेगी। देश में एक भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर NIOS द्वारा अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के मद्देनजर NIOS ने मदरसों, मकतबों और दारुल उलूम को सहायता और समर्थन दिया है। इस प्रकार भारत सरकार की शैक्षिक योजना स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास या SPQEM में सहभागिता कर रहा है। NIOS का एक अन्य अहम कार्यक्रम है हुनर, जो मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराता है। हुनर के तहत लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा उन्हें आजीविका प्रदान करने के लिए तमाम तरह के कौशल सिखाए जाते हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुलंदियां हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को लंबा समर्पण और कठिन प्रशिक्षण जरूरी होता है। इस क्षेत्र में व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा के लिए बहुत कम समय मिलता है, लेकिन खेलों के नायक दुनिया में देश का नाम ऊंचा करते हैं। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह